गैस निकलता है तो क्या साउंड निकलता है मुंह से? जस्ट ऑब्जर्व दिस केयरफुली. जी. एक बार मैंने कहीं पे जब यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा था, we had one lecturer who was Hindu, and a few of the students were Muslims, and a few were Christians. तो उसने साफ कह दिया कि if you don't recognize this are the universal sound, just when you, खासकर मुस्लिम लोग बिरयानी खा करके फिर कोका कोला या पेप्सी कोला पीते हैं. And he told them bluntly, when you've had your 2 plates of biryani and then you have the soft drink, just observe the sound that comes when you blow it. वो गैस जो निकलता है, just observe. तो उसने कहा 2 सप्ताह का टाइम मैं देता हूँ आपको, फिर in the next after lecture you come and tell me if you've experienced that. सब चुप रह गए. This is the natural sound. अब देखो जाप जब हम करेंगे, when you start with Om and you finish with Ma, it goes in synchronization. अब हिंदुओं के बीच में भी कई गुरु जो है मंत्र देते हैं लोगों को. But do these mantras bring the same level of harmony when you compare it to doing Om and you do the other mantras? And then in the yoga philosophy it says tad japas tadartha bhavanam. You have to get the meaning of the mantra. Om, even if you don't know the meaning, take it as the universal sound, just observe the vibrations. If you observe the vibrations, you can harmonize yourself and bring yourself to that level. जैसे हम कहते हैं ना, inner peace जो है उसके बीज जो है हमारे अंदर है, इसको अंकुरित करना है. और अंकुरित करने का ये तरीका है कि आप तस्य वाचका प्रणव ध्वनि यानी ओम. Or Pranav Dhani, it's interpreted in Sanskrit as the prime name of God. Otherwise, it's interpreted as the universal sound. अब जैसे योग फिलोसॉफी में ईश्वर प्रणिधान का आया है नियम में. अब बौद्ध जो ग्रुप है ना, उसमें तो भगवान नहीं है. Within the Buddha faith, they don't have God. जैनियों के बीच में भी पहले भगवान नहीं था. And Buddhism is known to be one thing which is focused on yoga. So what is Ishwar Pranidhan for them when they don't believe in God? So respect the laws of nature, the laws of the creation. You are respecting the laws created by God. So we should understand that इसमें जैसे कहते हैं ना, hard and fast rule नहीं ले जाना चाहिए. When tell these people, tell them if you don't believe in that, when you are alone, just sit down and try to experience it. अब सूर्य नमस्कार में ये जो हम मंत्र बोलते हैं, इसको बोलना जरूरी नहीं है. If you look at the basics, हमने इन मंत्रों को जोड़ लिए हैं. और इनफैक्ट क्या करना है, जब हम मंत्र बोलेंगे एक एक पोस्चर पे, we are breathing out while chanting the mantra. और जब हम स्ट्रेच आउट करते हैं, जैसे पीछे जाते हैं, दिस इज ब्रीदिंग इन. अब उस समय पे हम मंत्र पाठ कर रहे हैं, वी आर डूइंग द रिवर्स. आई एम जस्ट गोइंग विद द लॉजिक एंड द साइंस बिहाइंड दिस. सो दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग, कि मंत्र जो है बेसिक्स रूट में नहीं है. एंड इफ वी टेल दैट टू द हिंदूज, ये बोलेगा ये तो नास्तिक वाला व्यक्ति है. But just remember, when you're stretching back, अब मंत्र कैसे बोलेंगे when you have to breathe in. नीचे जब आ रहे हैं, you are breathing out, you can say it, but when you're going backwards, you're doing the
postures which forces your mechanism to breathe out. You can't do otherwise because mechanism में ये आता है कि forces you to breathe out. जैसे आप पीछे जब हाथ खोलेंगे ना, you can't breathe out, you have to breathe in. So this is where the adulterations, I always say that to people, adulterations जो है चाहे हम मंत्र जोड़ लिए चाहे कुछ भी जोड़ लिए, long term effect क्या होगा, it's not proven and it's going to be wrong. Thank you. I think Look it's at the time to adult. start. Sorry, sir. I think others are waiting. In No, fact, I'll just finish with one thing. There's one thing which is called hot yoga, HOT. They do it in steam yes, or in room temperature where the temperature is above 40 degrees, yes, 42, 38 to 40 degrees. 40, This is the average. 40. Yoga should be done at room temperature. You're pushing the temperature beyond the room temperature, beyond the average body temperature. अब यहाँ पे बीपी का प्रॉब्लम होगा, सब कुछ का प्रॉब्लम होगा, देन यू विल से योगा हैज हार्म मी. अब योग क्या होगा, योग का बदनाम होगा. So we just have to be careful. Thank you, sir. Okay, Thank you so much. I think we can start. Sorry. Yes, thank you so much. नमस्ते टू इंडिया एंड नमस्ते फ्रॉम लॉस एंजलिस. सभी लोगों का स्वागत है. आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू सेंटर अटलांटा क्यूमिंग से, और बहुत सारे सदस्य हमारे साथ आ चुके हैं. थर्ड डे ऑफ इंटरनेशनल योगा कोर्स. ये बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स है. ये इसका एम जो है अष्ट योगा, the NGO running under the aegis of Society for Sports and Fitness Development. The aim of this international yoga course is to give philosophy and psychology behind the yoga, because yoga is science. It is based on science and it is the most ancient wisdom we have on this earth. आचार्य जी, जैसा सभी लोग आचार्य जी के बारे में जानते हैं, फिर भी स्वागत के साथ मैं एक बार फिर कुछ लोग जो अगर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगी. आचार्य जी का एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बैंकिंग साइंस से भी है और बैंकिंग से भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से. मैनेजमेंट ही डिड फ्रॉम AB UK एंड दर्शनाचार्य वैदिक फिलोसफी दर्शन योग महाविद्यालय गुजरात इंडिया से. उनका डाइवर्सिटी रही है हमेशा करियर में, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री एंड एट Arya Sabha Mauritius. He has been a key resource person for Arya Sabha Mauritius on the universal Vedic culture, values, yoga and meditation, interfaith and intercultural dialogue at various national and international forums. Mauritius Council of Religion, Arya Pratinidhi Sabha America, Greater Atlanta, Vedic Temple, Hindu Center of Atlanta Yoga and Meditation Center in Cumming, Toronto Arya Samaj and Arya Samaj Markham 2019, and currently connected to several organizations worldwide on Facebook, WhatsApp, YouTube and Zoom. He is an author of numerous insightful articles on Vedic philosophy and contemporary issues in English and French with daily sharing on social media. तो स्वागत है आचार्य जी का. आचार्य जी से संवाद पहले ही शुरू हो चुका है एक क्वेश्चन के साथ, और आज के लिए मैं स्वागत करती हूँ. ओवर टू यू आचार्य जी. ओम नमस्ते एवरीबॉडी, सभी लोगों का स्वागत है. Let's bring our mind to focus. Sit down straight, body totally relaxed. Deep inhale and exhale. And while exhaling, inhaling, just observe the breath going in and out of the nostrils. And we are going to do the chanting of the universal sound, Om. And while doing the chanting of Om, just observe also the source of the sound
as it travels through the spine to reach the brain. Usually it starts from the navel region, the belly button, and goes upwards. And when you finish with Ma, just be aware of the chanting, of the vibrations. You'll be able to feel the energy level vibrating there. And if you're really focused, you can feel that energy also spraying throughout the body like a shower over your head. Just try to experience that, otherwise you can practice that later when you are alone. Join the palms together, rub them gently, cover the eyes, and slowly open the eyes below the palms, and moving the energy to the facial muscles. So welcome to this third session of today. I'll just do an overview of what we covered and then go into the depth of today. We looked into the definition, the source of yoga from the Vedas, and we looked into a few mantras of them where the word comes, Yunjate Manauta Yunjate, and the Yoge Yoge Tavastaram from Yajurved, 11th chapter. We went into the definition of yoga as per Maharshi Patanjali, Yogaschitta Vritte Nirodha. And the yoga protocol also goes in the same line. I quoted that yesterday. Then we also looked at the mental activities, which we have the ups and downs. It goes like a wave. So yoga means just putting a pause to that fluctuation, to that wave, and be with ourselves. And we also looked into the practice. Satodar Kale Nairantara Satkara Savitodrer Bhumi. You have to spend time regularly, constantly, and over a long period of time to achieve that. And baby steps count. It's just like the baby who starts walking. अगर पहले बार गिर गया और वो कहता है कि ये मेरे से नहीं होगा तो कभी चल पर नहीं पाएगा. Just take that from a live example. We've all seen babies growing before us and trying to walk. So yoga is just like this. Each and every baby steps count. Then we looked into the behavioral attitudes. Maitri, Karuna, Mudita, Upekshanam. Sukha, Dukha, Punya, Apunya. Vishayanam, Chit Prasadanam. So Chit Prasadanam is the end result of yoga. It's not pleasure. It's the level of happiness, the level of satisfaction just goes on heightening. Then practice detachment. Abhyas Vairagyam Tan Nirodha. We have to look into the practice, regular practice of detachment. And जितना भी detached होंगे, जितना भी हम निष्काम भावना से सब कुछ करेंगे, उतने ही कम दुखी होते जाएंगे, ज्यादा सुखी होते जाएंगे. And the example is Arjun in the Mahabharata. जब तक मोह से ग्रस्त थे तो वो हथियार नहीं उठा पाया. And if he continued like that, he would have been killed.
तो ज्ञान, कर्मा, upasana, bhakti goes hand in hand. We need the proper knowledge. We need the proper knowledge, dhyan. We need to engage in the proper actions, karma, and we need to be devoted, to be dedicated to the cause, which is bhakti. These are not separate branches or separate entities. It's an all-inclusive process. Then we looked also at yama, niyama, asanam, pranayam, pratyahar. We looked into the importance of jap as a medium, because if we start with the elementary jap, we start feeling the inner peace, we start feeling that we are totally disconnected with the whole world and we are focused on what we are doing. This is the beginning of meditation. And it's very simple. And if we go on the practice, we'll find that थोड़ा गुरु का मार्गदर्शन लेकर के then we can walk the way on ourselves. जैसे बच्चा चलने लगता है, बाप के अंगुली, अम्मा के अंगुली पकड़ करके चलता है, फिर जब स्वयं that confidence is there तो वो दौड़ने लगता है. This is what we need to do. We looked also into the different states of mind. And to come to the different states of mind, I'll just give one example. हिंदी में एक कहावत है बुद्धि को डिस्क्राइब करने के लिए. एक लकर बुद्धि, दूसरा लबर बुद्धि और तीसरा तेल बुद्धि. तो लकर बुद्धि का हम कुछ नहीं कर सकते. You can't mold that to become something. You can't bring that to positivity and to be able to discriminate between right and wrong. उससे नहीं हो पाएगा. और रबर बुद्धि क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर खींचेंगे, then it comes back to the same thing. और तेल बुद्धि क्या करता है, वो जहां जहां पर भी जाना होता है वो जा करके फिर extract the essentials and come back. It makes the most out of even the dire situations. And this is linked to the various states of mind, which we looked into as more, shift, vikshipt, etc. The more, shift, vikshipt, ekagra, and nirudh. The more avastha is the lakar buddhi. The shift and vikshipt avastha is the rubber path. And ekagra and nirudh is the tail path. We looked also at the need to be healthy physically. That's why the practice of some asana and some breathing exercises is very important. We also looked into the importance of having the proper knowledge, Shuddha Dhyan for Shuddha Karma and Shuddha Upasana. We looked into the moods which are both pleasant or unpleasant. Praman, Viparya, Vikalp, Nidra, Smriti. If we use them, the previous experiences of life, to consolidate our achievements, we are on the right path. But जहाँ पर भी गलती हो गए, हम वहाँ पे बैठ करके रो लिए, then we are still dwelling on the past, we can't move forward. और वही पांच जो है ना, प्रमाण, the proof, viparya, that is the contradictory issues, vikalp, when we are in a fix, nidra, we can, instead of doing things, we just go into sleep, and smriti, memory. It can be both for the positive and negative, like sleep. We need sleep to recover our body, but if we oversleep, what happens? We become sluggish in life. So we looked into that. Then we looked at the importance of being aware that each and every action of ours,
starts from the mind, then goes into our thoughts, goes into our words, and then flows as physical action. Manasa vacha karmana. Be aware also that this body is not the finality of life, because the main question is इस शरीर से क्या छूटता है तब ढेर हो जाता है. There is something which leaves that body, and that is what we call Atma, Jivatma, soul. And this is the conscious part, this is what makes the body going, and this is the total master of this body. हम जो कहते हैं कि मन नहीं लगता है या दिल है कि मानता नहीं, all these are just, as we say, figments of imagination. I usually give the example of our car just being the parking, can't go by itself unless we sit down and do the steering, use the clutch and the brakes. And it's like that. We are using our mind, we are using our body organs, we are using our senses. Just like when we are driving our car, we use our hands on the steering wheel, on the clutch, on the all the other, for the lights, for the horn, and we are using our feet, synchronizing everything. Then we are able to move the car either forward or backwards for whatever we need to do. And the more we are careful, the more we are sure to reach safe destination. So this body is like that. Then it says, Tada drashtu swarupe avasthanam. Tada drashtu swarupe avasthanam. It says, know your original self. Why? Just I'll give you one practical example. जब हम घर से बाहर होते हैं ना, तो इतने आराम से नहीं रह सकते जितने अपने घर में रहते या दूसरों के घर में रह रहे. It may be a flat or a house which we have rented, but we are used to that. We know all the ins and outs. अब दोस्त के यहाँ गए या परिवार के यहाँ गए, लंबे काल तक हमने रह नहीं पाते, because we tend to go back to the source, to our home. तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, take it like this. Till and until we are aware of our inner self, we may be doing the whole round of the world, we'll come back again eventually to look for the inner self. And the practice of yoga makes us reach this target at the earliest possible. Then there was the question of vritti sarupyam itaratra. The thing that we confound ourselves with our emotions and feelings. That's why often we are unable to gauge the situation independently and look for the proper solutions. In terms of management, it says thinking out of the box. Then we start with today. There are two concepts in yoga, bhog and apavarga. Bhog is the cycle of birth and death, pains and pleasures, bondage. Then apavarga is detachment. जैसे मैंने बताया था ना, मिठाई खा करके मिठाई में सुख नहीं लेना. You know you are eating that, but it's not for pleasure. And the more you start detaching yourself, the first sense to start detachment is taste. So if we go on that, we'll be able to now say, okay, मिठाई हम खा रहे, स्वाद अच्छा है, ठीक तरह से बना हुआ है, and everything. Independently, we can judge the quality of that sweet. And we can also see that, okay, it's good to take a sweet here and there, not too much.
So we are also regulating to be moderate in our life. And this is where Samanya Buddhi, Medha Buddhi, Ritambara Pradya and Pradya Buddhi की ओर हम प्रेरित होंगे. We'll start with the discriminating intellect to know what is good and what is bad. And when we know that, we'll be more inclined to engage on the good track. Then we'll be able to be focused, not diverted by here and there, just like when we are driving our car. रास्ते के दोनों बाएं दाएं में क्या हो रहा है, this is not our concern. Our concern is our destination. हाँ, थोड़ा सा distraction होता है, but our destination is in focus. We remain focused on our destination. तो वैसा ही होता है. Then we go towards that realization of the inner self, जिसको हम आत्मा या जीवात्मा कहते हैं. And that goes in line with, the shlok which says, mantra which says, asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya. It says we'll be moving from untruth to truth, because with the discriminating faculty of the mind, we'll be able to move out of ignorance to the light of knowledge. Tamasoma Jyotirgamaya is not the physical darkness or the physical light. It's the darkness of ignorance to the light of knowledge. Then Mrityorma Mritam Gamaya will also be able to break that to go into Moksha Mukti, which is known in other faith, other religions as salvation. You see, finally it boils down to the same result. Then we need to rise above the 5 klesh: avidya, asmita, rag, dvesh, abhinivesh. Avidya is ignorance. Asmita is confounding the body with the soul. All the feelings which are physical to the body, we tend to associate that with the soul. So when we confound, we mix those two, उसमें घुलता मिलता नहीं है. But जब हम घोल देते हैं सब कुछ, then we fail to see the light in front of us. Then rag, and the sutra says, sukh anushayi raga. जिस चीज में हम सुख लेते हैं, उससे राग हो जाता है. We get attached to that. And we get attached to things that brings us pleasure, not to things that bring us happiness, because happiness is a high level. Even if we use pleasure and happiness interchangeably, but pleasure is more on the physical level, and happiness is at a higher level. Then dvesh. वही चीज जब हम उससे सुख मिलना बंद हो जाता है, तो हम उससे द्वेष करने के लिए निकल पड़ते हैं. The thing that stops giving us happiness or pleasure, then we start developing aversion to that. So we need to be careful, moderation in life. Then abhinivesh. Abhinivesh is the fear of death. And the human attitude is to say, this is not mine, this is for others. Look, in the case of COVID, people said, no, I'm going out because this is not for me, this is for others. And then maar kha jate hain. They get it, they catch it, and they start suffering. We should be aware that everything has an end. And this body also has an end, the soul continues its journey. So we are the makers of our own destiny for the next birth, or whether we'll become eligible to go into Moksha Mukti. And that concept goes into the concept which Sankhya Darshan tells us
अभ्युदय and निश्रेयस. अब लोग कहते हैं सांख्य योग is another philosophy. No, it boils down to the same thing. It brings us to nishreyas and abhyuday. It comes to material and spiritual wellness. वहां पे भोग and अपवर्ग था योग शास्त्र में. And Sankhya comes with abhyuday and nishreyas. And in the Ved mantras is abhisht and pitay. In the daily sandhya, the first mantra says Shando Devi Abhishtaya Apo Bhavantu Pitaye. It's Abhisht and Pitaye. Otherwise, if you know the mantra Prajapate Natvadeta Ninyo, it ends with Vayam Syama Patayo Rainam. We are praying to Ishwar God for both material and spiritual treasures. So yoga is not that we have to live like a pauper. Bhikari ki tarah nahi. We still have to live with this world, within this world. When we have sufficient to be able to live a decent life, let's change our focus. Let's gear more and more towards spirituality. And this is the concept of the ashram also. From grihast you move to vanprastha and you move to onwards to sannyas. And remember the four objectives of human life: dharma, artha, kama, moksha. So you have to live righteously, your earnings to be righteous, enjoyment also is righteous, then you'll go to moksha. And there's no other faith which contradicts that in this world. I was talking in the beginning, whether you be a Muslim, you be a Buddhist, you be even the atheist, the non-believer. You be Chinese, you be African, you be European, you be American, you be Hindu, you be whatever you want in the world. Nobody will be able to challenge, no, that righteous living, being on the path of truth, being on the path of honesty is bad for life. Nobody will tell you that. And nobody will tell you that you have to cheat, you have to steal to be able to live decently. It will always tell you, put up your efforts, and then if you are a believer in God, he will say God will top up. Otherwise, prakriti apna kaam karega, karma apna kaam karega. The law of karma will operate and you'll get the benefits of your righteousness in life. We looked into the four behavioral attitudes, Maitri, Karuna, Mudita, and all these lead to Vishoka va Jyotish Mati, which says a sorrow-free, luminous state of mind. Vishoka va Jyotish Mati. This is where we'll reach in yoga. And ultimately growing on the same path will become Vitrag Vishayam va Chittam. Will become free from the worldly desires with the steadiness of the mind, living in this world but also above this world. And you know, the yogi normally says, even if you put him in the midst of a crowd, he'll be able to remain focused. बाजार में भी उसको बिठा देंगे, वो आराम से बैठ जाएगा without feeling the disturbance, because he knows how to disconnect with all the disturbances. It says, Yatha abhimata dhyanadava. We'll reach that focused state of mind, and with that focused state of mind, we can achieve whatever we want in life. And the ultimate objective is to attain samadhi. That is, the first level of samadhi is self-realization, atma sakshatkar. Second one is prakriti sakshatkar. That is, we know the self within this body goes beyond this body and lives beyond this body. This body is only a tool, a vehicle, just as our car outside enables us to move here and there, to reach our work, to reach anywhere we want to go. And then we realize matter serves us
till we are within this body. And the more we indulge in that, the more we'll get sick. And it goes with the sutra for the causes of suffering, which we'll look into. Parinam, tap, sanskar, dukkha, gun, vritti, virodha. Parinam, it's the consequences. Tap, unforeseen occurrences. Parinam, tap, sanskar, that is what we've inbuilt ourselves as practice. What are the habits we've developed? Gun, vritti, virodha, the changes between sattva, rajas and tamas. Let's come to it now in the causes of suffering. Parinam, the consequences. मुझे मान के चलें मीठा खाने की उसमें बहुत सुख मिलता है. I go on eating and eating and eating. What happens at the end of the day? My body system crumbles and I start developing all sorts of illnesses. That is parinam dukh. Then tap dukh. I prepared the best of probably the things I like to eat. अब उसमें मक्खी गिर गया, छिपकली गिर गया. अब मैं उस कारण दुख हूं ना. लेट इट बी, कोई बात नहीं. इसको बैठ करके मैं दुखी हूं तो आई वोंट हैव द इनिशिएटिव टू मेक समथिंग एल्स टू बी एबल टू ईट. तो ताप दुख, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. You never know. You've taken all the precautions, but as we say, इस सृष्टि में रहे तो तीन तरह के दुख हमें निश्चित है. एक आध्यात्मिक, which is due to our own negligence, our own fault. दूसरा आधिभौतिक, that which can be caused by other living beings. It can be humans, it can be other species. जैसे आप रास्ते में जा रहे, कहीं से कुत्ता निकल करके आकर आपको काट लिया, या सांप आ गया सामने में, तो उससे भय है, या सांप ने काट दिया. तो that these are the things like that which occur in life. Then the third one is natural calamities. If you are in this world, you have to suffer. Cyclones, tornadoes, tsunami, floods, droughts, ये सब तो झेलना ही पड़ेगा. And yoga tells you if you want to move out of these, you now go to the last part, asampradyat samadhi, then nirbij samadhi, where you've realized you are now, realize yourself, you realize the importance of matter to life, but then you realize you are in communion with God and you've risen above all these things. Now you know Viday, that is, this body is only a vehicle. The ultimate objective is to be in the eternal bliss of God. ईश्वर के जो लेश मात्र दुख भी नहीं है उसके सुख में, जो अनंत सुख है, उसको भोगने के लिए हम अपने आप को क्वालिफाई कर लिए. So that is the last part or the last target in yoga. Then there is one question which always comes from people to me. तीसरे पाद पे क्यों नहीं बोलते हो? Which is the Siddhi Pad. This Siddhi requires much of our time to reach. उसमें लगातार constant practice करना है. And we start engaging into the Siddhi. Once we achieve any of them, there is the risk. And the risk इसमें क्या है? We'll be sleeping on the banana peels. Most of the people who've achieved Siddhi, what they do now, they use this to show that they are a higher level above all people.
So this is Lokeshna. Now looking for name and fame. And using that name and fame now to start earning big money. And this money will be left here. So that is Vitteshna. And then making a line of followers. This is Putreshna. So the basic goal of yoga to be detached. Now we start getting engrossed in the name and fame, in having lots of wealth around us and having lots of disciples. So we are engrossed in that instead of growing on the path of yoga, detachment, vairagya. Abhyas, vairagya, tannirodha. We are now engrossed. So we are lost in our target. And Maharshi Patanjali in this third chapter, तीसरे पाद में लिखते हैं, ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया. Those powers which are achieved in the siddhi, they are obstacles in the way of samadhi, that is the last target of yoga, the final destination of yoga. Because they are powers in an outwardly focused mind, not the internally focused mind. जैसे हठ योग में एक क्रिया है त्राटक. You have the flame, and I don't advise people to use the candle because the candle is more rajasic and tamasic. It contains animal fat and chemicals. Use ghee and shuddh desi ghee. That is more sattvic. I don't say it's 100% sattvic, but it's more than 75% on the sattvic. Sattvic is dominating there, sattvic pradhan. But then reaching at some point in time, you have to withdraw yourself from that flame and come inside you. Because if your dharana is still outside, your dhyan also will be outside. Dharana, dhyan and samadhi. So dharana, the focal point where you are focusing, ultimately when you come to yourself, using an external tool in the beginning is good. A flame or some other point outside, but eventually when you're practiced to that, you've come to that state where you have a pointed focus. Just try to focus on the center of the eyebrows or the tip of your nose or here in the center of the ribs, where this is called the empty space below the ribs, and this is called in Sanskrit Hridayakash. This is where the soul resides. And the proof of that is when I say I, where do I hit with my hand? It's not here. I don't say I like this. I don't say I like this. I say always I, pointing to that part of the body. This is the natural indication. So let's start focusing, bringing our focus from outside to inside. Because peace, whatever be on the outside, is always temporary. But inner peace is longer lasting. So we need to bring our dharana inside. So far as we keep it outside, we'll always be running on the outside. And yoga is the connection with the self. Yud Samadho. And if we go into dharana, even if we practice it in the tip of the nose or the center of the eyebrows, gradually, slowly, just flows down to that part, the Hridayakash. And there we connect to this, we connect directly. We realize ourselves as soul within the body. Then on that path, when we grow on dhyan, we'll have that ekatanta, long period of silencing of the mind. It's just as if you see the waves on the ocean, it never stops.
but nevertheless, sitting down and observing the waves moving on the ocean or on a lake. At one point of time, you are no longer focused on those waves. You're just focused on the beauty of the scenery. You lose the sense of the waves moving in front of you. You lose the sense of even the noise of the waves, the sound of the waves in front of you. You just have the beauty of the scenery in front of you in your mind. And this is where usually people go to beautiful scenery and they feel the silence, they feel themselves connected. It's just because of that. They are at one point of time, they become totally disconnected. They have only the larger picture in front of them. Because the waves or the moving of the leaves, the sounds, these are elements of the picture. These are pieces of the puzzle. And when you're looking at the whole picture, you don't see the marks or each small bit of the puzzle as an entity. So this is dhyan, ekatanta. You're focused, you realize that you are within yourself, within the inner peace, the inner silence. And this is where you start now on Yogash Chitta Vritti Nirodha, because it's level frequency, it's not the ups and downs or the fluctuations of the mental activities, it's just total silence there. So that's dharana, dhyan, and ultimately samadhi, where we'll reach the different levels of samadhi. As we say, sampradyat samadhi. You are moving from the gross thought to the subtle thoughts, and you start experiencing the inner bliss. Then you go on asmita samadhi, asmita sampradyat samadhi, where you realize yourself. You are aware of the soul within the body. And the next step is asampradyat samadhi, where even that awareness subsides. The awareness of the self subsides. The impressions, the imprints, the sanskar also subside. And this is where often we start now realizing the light within ourselves. Bhav pratyay, the state of bodilessness. We even are not aware at that state that we are the body. The ultimate objective is we are absorbed in that state of we are totally aware that we are in a state of mindfulness, wakefulness, but totally above what we were used to living. And this is the state where we are free from pains and sufferings. Dukh se chhod karke fir sukh ki prapti. And that is a level of bliss which can't be felt by the senses of taste, smell, sight, hearing, and touch. Or antahkaran, through our inner, as we say, 11वें indriya, or the sixth sense, we can just feel that peace, feel that happiness, feel that joy. And to grow on that purpose, I just probably would go on concluding now. Yesterday we were talking about Brahma Muhurat, and it was a question of why, because the level of oxygen is at the purest form in that part. The level of human activity also is low.
And we have the level of ozone free at the ground level is higher. And I gave the example, O3 is used whenever water is bottled, the water bottles are crossed through O3 to purification. And if at that point in time we are aware, we are awake, we are sitting down in meditation, or we are doing some walk or some hatha yoga exercises, so we're increasing our breathing of O3, and that is going to purify our body. It will help us to bring the level of sattvika within us. And the ultimate goal of yoga, especially when we go on yama niyama, it's about bringing spirituality as spiritual reality in day-to-day life. You remember the first day I started with one story about the mind in the forest? I'll conclude on the same lines. Just give me a minute, please. So we started with saying about our mind like going into a forest. We have the option of putting it, oh, we've been left in a forest, how would we manage? How would we survive? Or take it from the other angle, the beauty of nature, survival on fruits, on the water from the springs, and we'll be happy. Yoga with yama, niyama, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, and samadhi. I'll bring you again to the tree. To have a beautiful tree with a beautiful trunk, a beautiful crown of leaves and flowers and fruits, what do we need to nurture? We need to nurture the roots. You can't water the leaves, you can't water the flowers and the fruits. You need to water the roots. And as far as we nurture the roots, this is by nurturing yama and niyama in our life. So in yoga philosophy, remember yama, niyama are the essentials, the stepping stones to go on the path of yoga. So nurture the roots for a healthy trunk and a healthy crown, which will yield beautiful flowers and beautiful fruits. We'll be able to realize tada drashtu swarupe avasthanam, realize our own self. And with that, I'll end with a few words from the speech of Sri Narendra Modi on the International Yoga Day of 2019. He said, योग अनुशासन है, समर्पण है, इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है. योग अनुशासन है, समर्पण है, और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है. Yoga is a discipline and submission to the principle of ethical living and to be lived throughout life. It's no new words. It's giving the same definitions from Maharishi Patanjali Yoga. And if you go into Hatha Yoga Pradipika, in the preface, in the Bhumika, it's the same thing. He says, योग
आयु रंग जाति संप्रदाय मत पंथ अमीरी गरीबी आदि देश से परे है। योग आयु रंग जाति संप्रदाय मत पंथ अमीरी गरीबी आदि देश से परे है। It goes beyond the limitations of age, of color, of race, of belief, social and or economic background, and beyond the borders of any country. योग सब के लिए है और सब योग के लिए है। योग सब के लिए है और सब योग के लिए है। योग is for all and all be for yoga. That will bring us to realize Vasudhaiv Kutumbakam, the world as one family. The Yoga Sutras of Patanjali constitute the core of yoga philosophy. Sthiram Sukham Asanam. If we've practiced that, the lockdowns of COVID was time for us to practice that and to be able to go inside rather than going outside. It was a reminder from the nature. It's the journey of the self, through the self, and to the self. It is a way of life. And to attain these objectives, we need to move ahead, practice yoga from the starting blocks of having first good health, sharirik swasthya, good mental health, then good emotional health, and with good physical, mental, emotional health, we'll be able to safely fare through yama, niyama, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, and samadhi. Eventually, for whatever be the hurdles that we'll have in life, we looked into it yesterday, vyadis, dhyan, sanshay, and etc., we'll be able to rise above all these hurdles. And just the final word would be, yoga is not limited to on the mat time. Sirf hum jab mat par hai, this is not the holistic approach to yoga. That is good for physical health, for synchronizing the body, but remember yoga joins the body, mind, and spirit. It's joining, and joining is the root cause, root purpose of yoga. And if I take it in the modern word, look at religion. Religion comes from the root word religare. It also means to join. But unfortunately, the world is so divided with so many religions. Let's not make the same mistake with yoga by dividing yoga instead of uniting people in the name of yoga. Yoga is union, is yoking, is uniting. So let's use yoga to live in this world as one family and not leave yoga just for the time that we are on the mat. It's part and parcel of life. Thank you for attention. ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्ते. धन्यवाद आचार्य जी को. मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें ताकि हम लोग और स्क्रीनशॉट्स भी ले लें
for this memorable picture of during the COVID, जहाँ हम लोग इतनी दूर से एक दूसरे के साथ हैं. आचार्य जी हिंदू टेम्पल अटलांटा इस वक्त मॉरिशस में है. आई एम इन लॉस एंजलिस. Kusum is here with Dubai, and many more people are across the globe. So let us take a beautiful pic that is going to be remarkable as well as memorable for all of us. और अभी जैसे आचार्य जी ने कहा कि कोविड का टाइम हमें हमारा अंतर ध्यान का था, अपने अंदर झांकने का. और आचार्य जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरी Amazon पे बुक हिट हुई थी मार्शल द माइंड, उसके लास्ट पेज पर मैंने यही लिखा था, योर सोल इज क्राइंग टू मीट यू. हम सबसे मिलते हैं लेकिन हम अपने ही अंतरात्मा से नहीं मिलते हैं, हम उसी का ध्यान नहीं रखते हैं और उसी से बात नहीं करते हैं. हमें बड़ा लोनली फील होता है, हमें बड़ा क्रेविंग होता है, हम किसी को फोन करें और घंटों बात करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा के साथ 10 मिनट भी बैठने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है. सो दैट इज अ रियल टाइम कि हम अपने साथ अपना वक्त बिताएं, अपने आप को समझें, अपनी आत्मा को आत्मसार हो अपनी यही आत्मा से. सो धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतना हमारे साथ समय दिया हमें, और अभी भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं. स्क्रीनशॉट्स जो भी ले सकते हैं वो जरूर अपना लेकर हम सबके साथ शेयर करें, और हम लोग भी इसको स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे ताकि आप लोगों को भी हम लोग प्रोवाइड करा सकें. So wish you all well, do well in life, and do yoga, live yoga in life 24 hours a day. धन्यवाद, थैंक यू सो मच. नीतू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. कोई क्वेश्चन अगर है, एक और दो क्वेश्चन अगर आचार्य जी से कोई पूछना चाहेंगे तो आप चैट में लिख सकते हैं. वी विल टेक अप. आचार्य जी आने वाले हमारे कई वर्कशॉप, कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज पे हमारे साथ रहते हैं. और योग इन गीता, अगर इस पर आचार्य जी के प्रीवियस लेक्चर सुनना चाहेंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अंजुम पाटियाल, वहां जाकर पिछले जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं आचार्य जी के साथ और भी डिग्निटरीज के साथ, आप लोग वहां सुन सकते हैं. सो नो मोर क्वेश्चन. आई थिंक वी हैव लेफ्ट एवरीवन विद देयर ओन सोल टू थिंक अबाउट, अपने ही अंतर ध्यान में. धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस नीतू शर्मा जी को. कुछ लोग नए नए भी जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी नीतू शर्मा जी का, और उनका स्वागत करना चाहूंगी. नीतू शर्मा जी साइंस ग्रेजुएट है, Masters in Computer Application, started practicing around 12 years back successfully, and now she's on her mission with a self-management course designed by her along with me, so that people can improve their health. Because at the very young age, when you get a setback, of your health, then you realize what is happening with you. One various school, yoga, Iyengar and Ashtanga yoga, she has been teaching for past 8 years. She has finished her yoga. So I would like everybody to practice with Neetu Sharma ji. Namaskar, good morning everyone. Today we'll practice one series where we are going to cover some basic joint movements and some standing and some sitting, lying down, front and supine position. We are going to cover those asanas and some pranayam, and in the end, as ma'am also mentioned yesterday, dhyan is very important, so we'll practice dhyan also for 3 minutes today. तो अगर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन जॉइन मी, और जो सिर्फ देखना चाहते हैं देख सकते हैं.
कुछ कुछ आसन्स में रिस्ट्रिक्शंस होंगी, सो प्लीज लिसन केयरफुली कि किनको नहीं करना है। लेट अस स्टार्ट विद ओम। ज्ञान मुद्रा बना ले। फर्स्ट फिंगर ऑन thumb together, rest 3 fingers pointing down, elbows bent, spine straight, navel in. Deep breath, take a deep breath, inhale. Join your hands, rub your fingers. धीरे से अपने आसन में उठ खड़े हो। शुरू करेंगे नेक एक्सरसाइजेस। गर्दन को धीरे धीरे दाएं कंधे पर झुकाना है आपको। आप हाथ पीछे पकड़ सकते हैं, जस्ट टू टेक केयर कि आपके शोल्डर्स एक ही पोजीशन में रहे। इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड करें। जो लोग साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं दे कैन ओपन देयर वीडियो। अगर सोनिया जी, खन्ना जी, अंजू, सुनीता जी, सुधा, रेखा जी और कोई भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दे कैन ओपन देयर वीडियोस। इनहेल सभी लोग फीडबैक फॉर्म जरूर भर दीजिएगा टू गेट द सर्टिफिकेट। फीडबैक फॉर्म का मैंने लिंक जो है वो चैट में दे दिया है। और लेट्स फिनिश द सेशन अगेन, एक बार हम लोग दे देंगे। जी नीतू। इनहेल इन द सेंटर, एक्सहेल गर्दन को राइट साइड बेंड करें। इनहेल सेंटर, लेफ्ट शोल्डर पे बेंड करें। इनहेल सेंटर, गर्दन को दाईं ओर घुमाना है, टर्न टुवर्ड्स राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। इनहेल सेंटर, अगेन टर्न टुवर्ड्स राइट। Inhale center, exhale, turn towards left. Inhale center, exhale करते हुए पीछे जाएंगे, लेकिन आपको अगर गर्दन में पेन है या किसी को चक्कर आते हैं तो वो नहीं करेंगे। Inhale center, exhale forward bend. Again inhale center, exhale पीछे. Inhale center, exhale forward bend. Inhale center. अब रोटेशन करेंगे 3 times वन साइड, 3 times अदर साइड। जिनको ऑलरेडी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो केवल इस तरह से पीछे पीछे ही घुमाएंगे गर्दन को, पूरा रोटेशन नहीं लेंगे। बाकी लोग टेक अ फुल रोटेशन स्लोली, 3 times वन डायरेक्शन, 3 times अदर साइड एंड कीप ब्रीदिंग। पीछे की ओर ब्रीद करें, आगे की ओर एक्सहेल करें, पीछे की ओर ब्रीद इन। ऑपोजिट भी करेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। ऑपोजिट साइड। धीरे धीरे करना है, गर्दन का हिस्सा आपका बहुत ही डेलिकेट है, सो डोंट गिव एनी जर्क। इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को खोल दें शरीर के साथ। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे जितना आप स्पाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए palms facing down
and the hands will come down. While going up, the palms face up. Inhale, stretch up, exhale, down, palms facing down. Two more times. Inhale, lift up, palms face up while going up. Stretch fully, exhale, palms down, hands down. Last time. Inhale, lift up, palms facing up. When you're taking the hands up, stretch. And exhale, palms facing down and hands down. यहां से दोनों हाथों को कंधों पे रख लें और आगे एल्बोज मिलाते हुए इनहेल करते हुए आगे से ऊपर जाना, एक्सहेल करते हुए पीछे से नीचे. Because you are standing, you are inhaling. When you are contracting, you are exhaling. You expand your hand, you take your hands up, you are expanding your chest. Inhale fully, exhale down. Opposite direction. From the back, you take your hands up, inhale, expand, exhale, contract down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last time, inhale up and exhale down and relax. Next is knee bend. For that, keep your feet shoulder distance apart. पैरों में कंधों के बराबर फासला कर लीजिए और दोनों हाथ सामने. हाथों की आपको फिस्ट बनानी है, अंगूठा अंदर. इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें हाथों को, एक्सहेल करते हुए बेंड योर नीज. जितना भी आप इजीली बेंड कर सकते हैं बेंड करें. इनहेल अप. इनको ज्यादा घुटनों में दर्द है वो हल्का बेंड करें. एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Hold for 3 counts. 1, 2, 3. Inhale up and hands down. Relax. Next, कटी चक्रासन. आपके पैरों में जो फासला बना हुआ है वही रहेगा. डोंट मूव योर फीट. सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर. स्ट्रेच. एक्सहेल करते हुए टर्न टुवर्ड्स राइट साइड, but your lower part will not move. Move from your waist only. Twist. Hands go back. The left hand will touch the right shoulder. Inhale, center. Exhale the other side. Your hips won't move, they will remain in one line. Inhale, center. Again, right side. Inhale, center. Left side. Keep pushing your hips forward. They should not go back. Inhale, center. And relax. पैर वहीं रहेंगे आपके. ताड़ासन. हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए एंड टर्न योर पाम्स आउटसाइड. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर. स्ट्रेच योर बॉडी. एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे पंजों पर आ जाइए. एंड बिकॉज वी आर एक्सपैंडिंग, अगेन इनहेल हियर. एक और श्वास लीजिए. स्ट्रेच और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे एड़िया वापस. सामने से हाथ वापस. One more time. This time we'll try holding up for 3 to 4 counts. Inhale. हाथ ऊपर.
स्ट्रेच, एक्सेल करते हुए एड़ियां ऊपर, इनहेल हियर, होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल करते हुए धीरे से एड़ियां वापस, हाथ वापस। ताड़ासन, इससे आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेच हुई है, बॉडी बैलेंस भी इंप्रूव होगा, टोज में भी ब्लड सर्कुलेशन एंड पूरी स्पाइनल ब्लड सर्कुलेशन। Next, we will do tree pose. We had practiced this yesterday also. If you want support of the wall, you can take, because important is to that your body remains still. तो बिना सपोर्ट के अगर आपकी बॉडी शेक करती है, इट इज बेटर टू टेक अ सपोर्ट, और दाएं पैर को बाएं जंघा पे ऊपर से ऊपर एड़ी को लगाइए, जहां तक भी आप ले जा सकते हैं। आपका यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ, लेकिन जैसे ही नी के ऊपर पैर आने लगता है, इट इज बेटर टू शिफ्ट द फुट डाउन बिलो द नी। घुटने के ऊपर नहीं रखना है, घुटने को नुकसान होगा, इसलिए या तो ऊपर घुटने के या घुटने के नीचे, और सामने एक पॉइंट पे नजर को टिकाएंगे। And if you can leave the support, leave the support, pranam mudra, and keep breathing here, normal breathing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से वापस। नजर को एक पॉइंट पे टिका के रखेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। मैं ऊपर नीचे देख रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम लूजिंग माय बैलेंस, दैट यू शुड फोकस एट वन पॉइंट राइट इन फ्रंट। लेफ्ट साइड, एड़ी को टिका लें, थाई पर ऊपर से ऊपर, एंड प्रणाम मुद्रा, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वापस। हाथों पैरों को हिला लेंगे। नेक्स्ट, पादहस्तासन। हमने कल भी अभ्यास किया था। पादहस्त मतलब पैर के पास आपको अपने हाथ लेके जाने हैं। पैरों में आप कंफर्टेबल डिस्टेंस कर लें, और जिनका बहुत अच्छा पुराना अभ्यास है वो पैरों को मिला भी सकते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए रीढ़ को सीधा रखते हुए आप हाफ पे जाएंगे। पहले जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो यहीं पे रुक जाएंगे, दे विल नॉट गो फॉरवर्ड, वो यहीं से बाद में ऊपर जा सकते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे नीचे जाएंगे, और हाथों को पैरों के पास लगाएं। पैर तक नहीं जाते हैं, एंकल, घुटने के पास, शिनबोन, कहीं भी हाथों को रख लीजिए। आप हाथों को इवन घुटनों के पीछे लॉक भी कर सकते हैं। यू हैव टू ट्राई टू ब्रिंग योर एब्डोमेन क्लोजर टू योर थाई। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। फर्स्ट वी विल स्टॉप हाफ वे, स्ट्रेच करिए रीढ़ को पूरा, एंड देन लिफ्ट अप, और वापस। अगर आपकी बैक कमजोर है तो while going down and while coming up you can slightly bend your knees, micro bends. One more time, inhale, lift up, exhale. If you want micro bend you can, but keep your spine stretched straight, halfway stretch, and exhale करते हुए पूरा full down। नीचे जाने पर कोशिश करें घुटनों को सीधा करने की, जिन्होंने बेंड किया था they can try straightening the knees, and again if you want you can slightly bend your knees, stretch your spine, spine को सीधा करना है। हाफ वे आइए, इनहेल करते हुए पूरा ऊपर, स्ट्रेच अप, घुटने सीधे और हाथ वापस। बिकॉज वी हैव डन फॉरवर्ड बेंड, सो इसका एक काउंटर पोज जरूरी है करना। तो फिर से पैरों में आपका थोड़ा सा फासला, कंफर्टेबल डिस्टेंस,
दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और अंगूठे आपके पैरों आपकी टेल बोन के दाएं बाएं इस तरह से लगा दीजिए, उंगलियां बाहर आपकी साइड में फेसिंग फॉरवर्ड। इनहेल करते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, अगेन बिकॉज वी आर एक्सपैंडिंग वी आर इनहेलिंग। कोहनियों को पीछे ले जाने की कोशिश करें, एक्सेल करते हुए कम अप। So this was just a counter pose. Next, त्रिकोणासन। पैरों में 2 फुट के करीब फासला कर लीजिए and right foot facing outside. I will just show my right foot is facing towards the right side and the left is little in. और आपके जो हिप्स हैं उनको एक लाइन में कर लीजिए, इस तरह से टर्न नहीं हो। So hold your waist and see that your hips are in one line with your body. जैसे आपकी बॉडी है, पैर है, उसी लाइन में आपके हिप्स भी होने चाहिए। दोनों हाथ कंधों की सीध में, उसी लाइन में आपके हाथ। So hands at shoulder level. Inhale. Inhale here. We are expanding. Exhale. Slowly start bending towards the right side. Side से जाना है, आगे नहीं आने देना बॉडी को। आपका बॉडी यहां तक जाती है, यहीं तक रुक जाए, और नीचे जा सकती है और नीचे लेके जाए, बट डोंट कम लाइक दिस। ऐसे आगे नहीं आना, ऊपर से ऊपर ही रहेगा शरीर। जितना कंफर्टेबली जा सकते हैं जाइए। आप हाथ को भी नीचे यूज कर सकते हैं लेग पे स्लाइड करने के लिए। इनिशियली टू गेट सपोर्ट यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, कीप स्लाइडिंग योर हैंड डाउन स्लोली स्लोली स्लोली। कीप ब्रीदिंग हियर। आप सामने की ओर देख सकते हैं, ऊपर वाले हाथ की ओर देख सकते हैं, आपका अपना लेवल है काम करने का। अब धीरे धीरे ऊपर आने से पहले हल्का सा नी को बेंड कर, अगेन टू सपोर्ट योर नी एंड टू सपोर्ट योर बैक बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस। और घुटना वापस, हाथ वापस। विल डू द अदर साइड। यहीं से दाएं पैर को, राइट को ले, लेफ्ट को आउट कर ले। योर बॉडी अलाइनमेंट वोंट चेंज, सिर्फ पैरों को बदल ले। लेफ्ट को बाहर कर ले, राइट को इन कर लीजिए। डिस्टेंस कंफर्टेबल कर लीजिए, 2 से 2.5 फुट का। अगेन योर हिप्स शुड बी इन वन लाइन। इनहेल, दोनों हाथ कंधों की सीध में, ये पूरा एक ही लाइन में है आपकी बॉडी। एक्सेल करते हुए वो लाइन आपने चेंज नहीं करनी, एज इफ योर शोल्डर्स योर हिप्स आर ऑन द वॉल, और वॉल से बिना दूर किए आपको लेफ्ट साइड बेंड करना है। कीप पुशिंग योर पेल्विक रीजन फॉरवर्ड, कीप बेंडिंग टू द लेफ्ट, जितना भी आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। अगेन कितना जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जाके रुक पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कीप ब्रीदिंग। While coming up, again you will bend your knees slightly to avoid any injury and hands down. धीरे धीरे जब आपका इसमें अभ्यास अच्छा हो जाएगा, you will be a regular practitioner, then you can go down, जैसे मैं जा सकती हूँ, with straight knee and you can come up with straight knee. But initially to avoid any injury, you can keep bending the knee while going up and down. और नीचे जाकर when you are holding, then you try to straighten the knee, वो भी जितनी होती है। धीरे से वापस और पैरों को चला लीजिए। So these were the few standing asanas. Now we will sitting postures. उसके लिए अपने आसन में बैठ जाएंगे और दोनों पैर सामने इस तरह से सीधे कर लीजिए, दोनों हाथ पीछे, दंडासन।
This is the relaxing form of Dandasana. Then you can keep your hands next to your hips, and then you can straighten your spine. This is Dandasana with awareness. इसके बाद पैरों के तलवे मिला लीजिए और भद्रासन या बटरफ्लाई पोज, उसमें रुकें। देखिए आप कहां तक अपने पैर अंदर ले जा सकते हैं, कितना अंदर ले जा सकते हैं अपने पैर। स्ट्रेच योर स्पाइन अप, रीढ़ को सीधा करें और घुटनों को नीचे की ओर पुश करें। यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा। इंटरनल फोर्स लगाएं घुटनों को, वी आर नॉट यूजिंग द हैंड्स। इंटरनल फोर्स लगाएं घुटनों को नीचे पुश करने के लिए, जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। एंड देन स्विंग द नीज अप एंड डाउन। This will improve the flexibility of your hip joints, जिनमें आपको आगे के आसन करने में आसानी होगी। और इसका रोज अभ्यास करने से आपका पद्मासन भी इजीली लगने लगेगा। करते जाएं। जिनका अच्छा अभ्यास है वो इसमें धीरे धीरे गति को बढ़ा सकते हैं। धीरे से वापस इनहेल, अगेन स्ट्रेच योर स्पाइन अप एंड एक्सहेल, स्लोली स्टार्ट गोइंग फॉरवर्ड। जितना भी आप कन्वीनियंटली जा सकते हैं। यू डोंट हैव टू राउंड योर स्पाइन लाइक दिस। इस तरह से रीढ़ को गोल नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग, दिस विल डैमेज योर स्पाइन। तो आपको रीढ़ को सीधा रखते हुए, चाहे आप हाफ वे जा पाए, डजंट मैटर, फील द स्ट्रेच हियर। यहाँ पे कोहनियां बेंड करते जाएं, कोहनियां नीचे लगाने की कोशिश करें। यू हैव टू फोकस ऑन टचिंग योर चिन टू द ग्राउंड। गर्दन नहीं मोड़े। कुछ लोग गर्दन मोड़ रहे हैं, इस तरह से नहीं मोड़े, गर्दन सीधी रखें। वी डोंट वांट टू पुट द प्रेशर ऑन दिस, ऑन द नेक एरिया। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। अगेन यू स्ट्रेच योर लेग्स फॉरवर्ड, दंडासन, सुप्त दंडासन। हाथ पीछे रख लीजिए थोड़ा सा एंड रिलैक्स। जब भी आप रिलैक्सिंग पोज में आए, then you focus on those body parts where you have felt the stretch last. जो लास्ट आसन में आपको खिंचाव महसूस हुआ था, जिन अंगों पर, उन पर ध्यान दें। Relax them so that they are more flexible. Next, वज्रासन। वज्रासन हो सकता है कुछ लोगों को करने में मुश्किल हो, स्पेशली जिनके घुटनों में दर्द है। तो what they can do is they can use 2 cushions, 3 cushions, डिपेंडिंग आपके कहां पर कंफर्टेबल है। आप इस तरह से घुटनों के नीचे रख सकते हैं कुशन को, अगर आपके घुटने दर्द करते हैं। अगर आपके पीछे एड़ियों में प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से एड़ी के ऊपर, सपोज यू आर नॉट एबल टू रीच फुल्ली, एड़ी के ऊपर रख लीजिए। सिट ऑन द कुशन, एक कुशन आगे, एक कुशन पीछे, कितने भी कुशन यूज करिए, रीढ़ को आपको सीधा रखना है इस तरह से। यू कैन इवन कीप द कुशन अंडर योर ankles, your feet, like this also. आप ये कंफर्टेबल पोजीशन अपनी खुद ढूंढिए, where you are comfortable, so that your spine is straight. जब हम स्पाइन सीधी रखते हैं, हमारे पैरों की जो पिंडलियां हैं, the ankles, वहां पर जब दबाव पड़ता है, then the impure blood starts flowing up towards your stomach, towards your heart. This is the only asana which you can do, which you have to do rather, after having food. After your meal, sit down in Vajrasana for 5 to 7 minutes to improve your digestion. जिनके पैरों में भी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, यूरिक एसिड बनता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। नीचे से सारा इम्प्योर ब्लड आपका पूरा ऊपर की तरफ आएगा।
तो ये मत सोचिए आप नहीं बैठ सकते, फाइंड आउट अ वे, यूज द क्वेश्चंस, बेड पे बैठ जाइए, वहां पे क्वेश्चंस लगा के कंफर्टेबली बैठिए वज्रासन में। इसके बाद करेंगे उष्ट्रासन। यहीं से घुटनों के बल आ जाइए और पैरों में और घुटनों में आपका बराबर फासला होगा। हियर अगर आपने घुटनों के नीचे पिलो रखा हुआ है तो रख कंटिन्यू कर सकते हैं। घुटनों में और पैरों में आपके बराबर फासला होगा। दोनों हाथ आपको कमर पे रखने, लाइक दिस, पाम ऐसे बना लीजिए और टेल बोन के दाएं बाएं आपके पाम्स होंगी एंड एल्बोस पॉइंटिंग बैक। So again, because we are expanding, we inhale and go back. जितना भी आप कंफर्टेबली जा सकते हैं और अपने हाथों से, आपका हाथों का क्या रोल है, कीप पुशिंग योर हिप्स फॉरवर्ड। चाहे आप 1 इंच पीछे जाएं, कोहनियों को पीछे करें, जस्ट गो ½ इंच बैक। गुड। हाथ ठीक से रखें, हाथ ऐसे नहीं रखने, हाथ ऐसे, बिकॉज यू हैव टू पुश योर हिप्स फॉरवर्ड, यू हैव टू सपोर्ट योर टेल बोन। जितना भी आप कंफर्टेबली जा सकते हैं जाइए। उसके बाद वापस आएंगे, पैरों को मिला लीजिए, घुटने खोल लीजिए, ओपन योर नीज, बेंड फॉरवर्ड, शशांक आसन, काउंटर पोज। ब्लड आपका पीछे सर की तरफ रश किया है, उसको नॉर्मल करना है आपको। घुटने खोलकर, पैरों के पंजे मिलाकर, टोज केवल सिर्फ टच हो रहा है, बिग टो सामने की ओर झुक जाइए, हाथों को खींचिए आगे की ओर। माथा लगता है तो लगाइए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। धीरे से वापस आएंगे। इसी पोजीशन में करेंगे उत्तान मंडूकासन। पहले आपने जितना फासला किया था थोड़ा और फासला कर लें घुटनों में। एंड अगेन अगर आपने कुशन रखे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि घुटने के नीचे कुशन रख लें, पीछे पैरों के नीचे कुशन रख लें, यू कैन कंटिन्यू विद दैट टू बी कंफर्टेबल। और हाथों को आप इस तरह से गर्दन के पीछे रख लेंगे, एल्बोज पॉइंटिंग अप, नेवल इन, स्पाइन स्ट्रेट। कीप ब्रीदिंग। Again, your digestive system is working, your lungs are expanding. Few breaths here, deep breaths, inhale, deep exhale. And relax. Again, forward bend, पैरों में फासला थोड़ा सा कम करके bend forward, शशांक आसन। शशांक आसन आपका काम भी कर रहा है और प्लस रिलैक्सिंग पोज भी है। आप पैरों को मिला लेंगे और धीरे से पैरों को बाहर निकाल लेंगे। दंडासन में दोनों हाथ शरीर के साथ और दंडासन। यहां से आप दाएं घुटने को मोड़ेंगे और आपका पैर जो है राइट नेक्स्ट टू योर नी होगा। हल्का सा पासरा रख सकते हैं, बट आगे नहीं रखना, घुटने के पीछे नहीं रखना। यू हैव टू कीप इट बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग एट बिगनर लेवल, वी आर प्रैक्टिसिंग एट मीडियम लेवल। तो अभी आप पैर को घुटने के साइड में रखिए और ऑपोजिट एल्बो में आप इस घुटने को ले लीजिए। दूसरा हाथ पीछे रखेंगे एंड ट्राई टू टर्न बैक। दिस इज वन लेवल। जिनका बहुत अच्छा अभ्यास है वो हाथ को ऊपर निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड को, और उसको घुटने के बाहर रख के एड़ी को पकड़ सकते हैं एंड टर्न बैक। शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जो भी आपकी पोजीशन हो, यू शुड बी एबल टू ब्रीथ कंफर्टेबली। लाइक आई सेड, यू डोंट हैव टू टॉर्चर योरसेल्फ।
यू शुड बी एबल टू ब्रीथ कंफर्टेबली, वो आपका कंफर्ट लेवल है. यू शुड बी एबल टू स्टे. गर्दन को टाइट नहीं करना है, गर्दन आपकी लूज होगी, उसको ढीला ढीला घुमाते रहें आगे पीछे, बिकॉज यू आर टर्निंग फ्रॉम योर वेस्ट. धीरे से वापस और पैर सीधा. Same, we are going to practice on the left side. Left foot in. Turn your left, bend your left leg and your foot is next to your knee. Now the right hand. Right hand की elbow में ले लेंगे या तो घुटने को और दूसरा हाथ पीछे. This is one option. Other option is दूसरे हाथ को ऊपर, right hand को stretch करें पैर के आगे and hold your ankle and turn back. Keep breathing. Shoulders down, neck relaxed. Neck should not be stiff. धीरे से वापस आएंगे, पैरों को सीधा कर लें, अगेन हाथ पीछे और दंडासन में विश्राम. सर को पीछे कर लें, हाथ पीछे, रिलैक्स. इस आसन से आपके इंटरनल ऑर्गन्स वो मसाज हुए हैं, एक्टिवेट हुए हैं. लिवर, स्प्लीन, किडनी सभी प्रभाव में, सभी मसाज हुए हैं, एक्टिवेट भी हुए हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी पड़ा है. उनके एक्टिवेट होने से सभी डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो ठीक से सिक्रीट होंगे, इन प्रॉपर टाइम सिक्रीट होंगे, प्रॉपर क्वांटिटी में सिक्रीट होंगे. अब पैरों को पीछे ले जाइए और अपने आसन में पेट के बल आ जाएंगे. यहाँ पे आप पंजे बाहर की ओर कर लीजिए, टोज फेसिंग आउट एंड हील्स इन, और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और उसके ऊपर माथा रख लीजिए. मकर आसन. मकर आसन आपकी वीरा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करता है, आपके शरीर को शांत, मन को शांत करता है. एंड रिलैक्सिंग पोस्चर. नेक्स्ट इज भुजंग आसन. पैरों को आप मिला भी सकते हैं, मिलाना पॉसिबल नहीं तो हल्का सा फासला रख लीजिए और दोनों हाथ चेस्ट के दाएं बाएं, आपकी ये चेस्ट के, ध्यान से देखिए, चेस्ट के दाएं बाएं होंगे, हाथ आगे नहीं होंगे, नेक्स्ट टू योर चेस्ट. When you will keep your hands next to your chest, your elbows will point up. Now elbows don't go out like this. तो इसलिए अगर आपकी एल्बो सपोज थोड़ी ऐसे बाहर निकल रही है, हाथों को बाहर कर लीजिए. Your elbow and wrist, they should be in one line. तो कभी भी हाथ यहाँ और एल्बो ऐसे नहीं, you will damage your shoulders. So hands ऐसे रख लीजिए, कोई बात नहीं, but your elbows should be in line with your wrist. और धीरे धीरे आगे से आपको धड़ को उठाना है, जितना भी आप कंफर्टेबली उठा सकते हैं, पूरा फुल नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली डूइंग दिस. आपकी हाथ एकदम फ्री होंगे, पाम्स पे कोई वेट नहीं है, आपका सारा वेट आपका नेवल पे है. और धीरे से वापस, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, पंजे बाहर, एरिया अंदर. इसको एक बार फिर दोहराएंगे, अभी ठीक से नहीं कर पाए हैं. हाथों को चेस्ट के दाएं बाएं रखना है आपको एंड एल्बोज क्लोजर टू योर बॉडी, जितने आपके पाम्स हैं. इनहेल करते हुए आगे से धड़ को उठाएं, उतना जितना आपका बॉडी अलाउ करती है. आपका नेवल के हिस्से पे वेट होगा, हाथों पे नहीं, हाथ फ्री.
हाथों पे नाम मात्र वेट है। और धीरे से वापस एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। आपका मणिपुर चक्र पूरा एक्टिवेट हुआ है, नेवल के अराउंड एक्टिवेशन, जितना भी नेवल के आसपास जो मल होता है वो निकलता है। दिस relieves your back also if there's any pain, any pressure, तो बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वी विल डू शलभासन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रख लीजिए इस तरह से, और राइट लेग अप स्ट्रेट, घुटना सीधा रखते हुए, और वापस। आगे से आपका शरीर नीचे है, चिन डाउन है, शोल्डर्स डाउन है, हाथ आपने थाइस के नीचे रखे हैं। सिंपली यू कैन कीप योर फीट टुगेदर और लिटिल डिस्टेंस। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप स्ट्रेट अप without bending the knee and down. Now those who want to practice this again, they can do this only, right side, left side. If you are a little comfortable, you can try with both the legs. Lift both the legs up, knee straight, and still if you are comfortable, lift your front body also. Keep breathing. And come back. एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, मकर आसन, पंजे बाहर, एरिया अंदर, एंड रिलैक्स। आपके नेवल के हिस्से में, आपकी कमर के हिस्से में रिलैक्सेशन महसूस करें, हल्कापन महसूस करें। शोल्डर्स ऑल्सो रिलैक्स बिकॉज आपके हाथ अंदर करके आपने शोल्डर्स पे भी खिंचाव दिया है। थाइज में हल्कापन बिकॉज यू हैव लिफ्टेड योर थाइज, फील दैट लाइटनेस। अब धीरे से करवट लेके पीठ के बल आ जाएंगे। We move to the next set of asanas. सेतु बंधासन, इसको ब्रिज पोज भी बोलते हैं, बिकॉज यू मेक योर बॉडी लाइक अ ब्रिज। दैट्स द पोज। दोनों हाथ शरीर के साथ, पैरों में और घुटनों में ऊपर बराबर फासला रहेगा। दे आर लाइक पैरेलल ट्रैक्स। आप ऊपर नीचे जाते वक्त, आई मेंशन यस्टरडे आल्सो, आपके घुटने बाहर की ओर या अंदर की ओर नहीं गिरने चाहिए। सो फॉर दैट यू कीप योर feet at a distance where you're comfortable lifting up the body. तो अगर आपको लग रहा है कि आप पैर और खोलना चाहते हैं, खोल लीजिए, but all the time your knees will remain on your heels. They will not go out, they will not come in. दोनों हाथ शरीर के साथ, keep your heels closer to the body as much as you can. If you can hold, good. If you can't, then you put your fingers under your heels. वो भी आप कर सकते हैं। Inhale करते हुए, again like I mentioned, we are expanding. शरीर को ऊपर लेके जाएं, जितना ऊपर आप कंफर्टेबली ले जा सकते हैं। एक्सेल करते हुए नीचे। वन मोर टाइम, इनहेल, लिफ्ट अप। धीरे धीरे जाइए एक फ्लो के साथ, झटका अवॉइड करना है किसी भी तरह का, तो इसलिए कम करें चाहे, लेकिन आराम से करें। लास्ट टाइम एक बार और ट्राई कर लीजिए। इनहेल करते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, एक्सेल करते हुए नीचे। पैरों को सीधा कर लें, हाथ खोल दें, एंड रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स।
ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी, and this is also good for improving your menstruation cycle, very good for women जिनके ज्यादा क्रैम्प्स और पेन होता है, they should practice this. नेक्स्ट, उत्तान पादासन, पैरों को उठाने का आसन। दोनों हाथ शरीर के साथ। अगर आपकी कमर कमजोर है, if you feel you have a weak back, then you can put your hands under your hips like this, support your back. नहीं तो आप हाथ को शरीर के साथ रखें, पैर सीधे, पैरों को मिलाएं, कंधे नीचे। इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर उठाना है 30 डिग्रीज पर, एंड होल्ड, नेवल इन, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और रिलैक्स, पैर नीचे, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, हाथ शरीर से थोड़े से दूर, फ्यू ब्रेथ्स हियर। नेक्स्ट इज अ विपरीत करनी, अर्ध हलासन। दोनों हाथ शरीर के साथ। अगेन यू कैन सपोर्ट योर बैक बाय पुटिंग द हैंड्स अंडर योर हिप्स। इनहेल करते हुए पैरों को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे, पंजे अपनी ओर। You can keep supporting your back by keeping the hands under the hips and keep breathing here. धीरे से घुटने मोड़े, पेट में दबाएं and hug your knees. आप पैरों को सीधा कर लें। नेक्स्ट इज पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और टोज विल बी पॉइंटिंग डाउन। पंजे अपनी ओर नहीं होंगे, टोज विल बी पॉइंटिंग डाउन। जैसे कि इसका नाम है पवन मुक्त आसन। यू आर रिलीजिंग ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, so you are giving way to the toxins that they go out through your toenails. तो पंजे नीचे की ओर। इनहेल करते हुए पैरों को, घुटनों को ऐसे हाथों से हग कर लें और घुटनों को पेट में दबाइए। दिस इज वन पोजिशन, यू कैन स्टे हियर। सर्वाइकल वाले स्पेशली वो यहीं रुकेंगे, आगे ऊपर शरीर को नहीं उठाएंगे। बाकी लोग इफ यू आर कंफर्टेबल, बाय एक्सेलिंग लिफ्ट अप और नासिका को घुटने के समीप ले जाने की कोशिश करनी है। कंधे नीचे रखेंगे, कंधे उचकाएंगे नहीं। कीप योर ईयर्स and shoulders apart. Shoulders should not go closer to the ears. Keep breathing here. Again, उतना उठाइए कि आपको choking feel नहीं हो. You are able to breathe. Toes pointing down. You want the toxins to go out. Inhale करते हुए धड़ को नीचे लाइए और exhale करते हुए पैरों को रिलीज करिए। That's the end of our asana series. So we will relax in Shavasana. पैरों में फासला कर लीजिए, दोनों हाथ शरीर से दूर, palms facing up, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। Focus on the entire body, right from shoulders to your toes, to your hands, to the back of your neck, everything. Release and relax. जो भी आपके शरीर पर इन सभी आसनों का प्रभाव पड़ा है, उसको एब्जॉर्ब करें। Let your body absorb that. And for that absorption, you just have to focus on the body. Focus on your breathe. Your breathe is sweeping away all the air pockets, all the blockages with it.
taking it out of the body, inhaling the fresh prana into your body, and while exhaling, it takes away all the blockages, all the toxins with it. It's very important to do shavasana after every practice because then you bring the body back into the healing mode. So wherever the extra stretches and everything has happened, the body will heal itself. धीरे से हाथों पैरों को हिलाएंगे, पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ सर के पास, लेटे हुए ताड़ासन करेंगे. Just give a stretch, one stretch, and then you release. Then you turn to one side, any side where you're comfortable. Bend your knees. Take the support of your hand and lift up and sit down. किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं. अगर आपको लगता है आप और जमीन पे नहीं बैठ सकते, यू कैन सिट ऑन द चेयर ऑल्सो फॉर द प्राणायाम. आंखें बंद रखें, शरीर स्थिर, रीढ़ सीधी. और प्राणायाम में क्योंकि कुछ देर बैठना है, सो इट इज गुड दैट यू सिट ऑन द एज ऑफ अ कुशन. हाफ आधे कुशन पे बैठ जाइए ताकि आपकी रीढ़ जो है पूरा टाइम सीधी रहे, आपकी बैक पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आए, यू आर नॉट एबल टू, यू डोंट फील टायर्ड. सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम. वी डिड दिस ऑन द फर्स्ट डे. हथेलियां पलटकर घुटनों पर, आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है. टुडे आई विल गिव फर्स्ट 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स में आप जितना भी फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं एक्सेल करेंगे विदाउट इनहेलिंग. यू विल नॉट इनहेल, कीप एक्सेलिंग, कीप थ्रोइंग आउट. 30 सेकेंड्स इज द लिमिट. उससे पहले रुकना चाहते हैं उससे पहले रुक जाएं, बट द लिमिट इज 30 सेकेंड्स. We will start together. Okay, take a deep breath, inhale, start throwing out. फोर्स उतना लगाइए कि आपका शरीर नहीं हिले, कंधे नहीं हिलने चाहिए. अगर हिल रहे हैं तो फोर्स कम कर दीजिए. कीप थ्रोइंग आउट फ्रॉम योर नोस्ट्रिल, जैसे आपको छींक आ रही हो, बाहर फेंकते जाइए. कंटिन्यू, कीप थ्रोइंग आउट. स्टॉप. आंखें बंद करके शांत बैठें. Bring your breath to normal. Again, next round of 30 seconds. Start. Deep inhale, start throwing out. Stop. आंखें बंद रखेंगे, रिलैक्स. दिस इज कपालभाति प्राणायाम. आप धीरे धीरे इसका टाइम लिमिट, इसके स्ट्रोक्स बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस. नेक्स्ट 2 minutes we will practice Brahmari pranayam. Sorry, Anulom Vilom pranayam we will practice.
दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अंगूठे को रखे राइट नॉस्ट्रिल पर, उंगली को रखे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर। आपको लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल। उंगलियों को दबाना नहीं है, जस्ट लिफ्ट करें। स्टार्ट। फोर्स नहीं लगाएं, slowly inhale and slowly exhale. Applying force will not help you in any way. It is not that कि आपका extra inhale हो जाएगा। पूरा ध्यान श्वासों पे रखें। लास्ट साइकिल कर लें। कंप्लीट योर साइकिल। आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो यू हैव टू फिनिश एट लेफ्ट ओनली। और उसके बाद शांत, आंखें बंद, शरीर स्थिर। नेक्स्ट वी विल प्रैक्टिस शीतली प्राणायाम। ये प्राणायाम गर्मियों में किए जाने वाला विशेष प्राणायाम है। स्पेसिफिकली समर्स में ही करते हैं, एज द नेम सजेस्ट इट्स अ कूलिंग प्राणायाम। तो मन, गुस्सा, इरिटेशन, ये सब शांत करता है। ब्रिंग्स यू इनवर्ड, अंदर की तरफ आपकी सोच, आपका मन। और अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इसके अभ्यास से वो भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो आप जीभ को गोल करेंगे, इस तरह से आगे एक पाइप की तरह बनाएंगे और आपको मुंह से ही इनहेल करना है, मेकिंग अ हिसिंग साउंड। जब पूरा इनहेल हो जाए, जीभ को अंदर ऊपर पैलेट से लगा देंगे। मुंह बंद हो गया आपका। होल्ड फॉर 1 सेकेंड, देन यू एक्सहेल यूजिंग योर नोस्ट्रिल्स। लेट्स डू 7 साइकिल्स ऑफ दिस। मुंह से इनहेल करना है। कंटिन्यू। हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आपका बीपी लो रहता है तो इसकी कम आवृत्तियां करें, 3 या 4 ही करें। इसको करने से आपके शरीर में ठंडक का संचार होगा। यू विल हैव अ कूलिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। गर्मी कम लगेगी आपको। सेवन टाइम्स करने के बाद ज्ञान मुद्रा बना लें, आंखें बंद, और 2 मिनट का ध्यान लगाएंगे। और ध्यान में मन ही मन आप ओम का जाप करेंगे 1:1 के रेशो में।
जैसे कल आचार्य जी ने बताया था, नॉर्मली हम 3 से 1 की रेशो में ओम का जब हम उच्चारण करते हैं, ध्यान में 1:1, जैसे ओम ओम ओम, इस तरह से मन ही मन आपको उसका जाप करना है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद और ध्यान जाप पर और अपनी श्वासों पर रखें। Take a deep breath. शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करें। इस एनर्जी को, ऊर्जा को अपनी आंखों पर, सर पे और पूरे शरीर पे मले। थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you for sharing. Very happy to have this session with you. वेलकम, थैंक यू। Thank you, Neetu ma'am. Thank you so much. थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Very Ritu happy ji. to have you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thanks a Thank you, lot. ma'am. Thanks so much. थैंक यू। यही Over. थैंक यू नीतू। यही इस कोर्स को ऑर्गेनाइज करने का हम लोगों का प्रयास था, प्रयत्न था कि हम फिलॉसफी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तीनों को अगर अच्छे से समझकर इस दिशा में आगे बढ़ें और बाकी सभी लोगों को जो जितने लोगों से जुड़ सकते हैं आगे से आगे, अगर हम ये अलग जलाएं और लोगों को समझाएं कि योग एक शैली है, जीवन शैली है जिसको सीखना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। वैलिडिक्टरी फंक्शन के लिए हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक एसेंस हमारी फिजियोलॉजी का, बेसिक साइंस का। मैं चाहूंगी अगर लोग अपना वीडियो ऑन करें और हम भी देखें कि अब जो हम एक ब्रेन एक्सरसाइज करने वाले हैं उसका सभी लोगों पे क्या असर आता है। So I would like, as a psychologist, I would like to again green, red, black, yellow, red, yellow, blue, black, green, blue, red, blue, Yellow, black, green, blue, blue, red, black, green. Okay, that's great. अब एक बार और हम इस चार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन अब हमने जो वर्ड लिखा है हमने वो पढ़ना है। येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, रेड, ग्रीन, हमने ये पढ़ना है। ऑल आर रेडी? एज आई सेड, हम सब पढ़ेंगे जो वर्ड लिखा है, आप जो कलर का वर्ड लिखा है। रेडी, स्टार्ट। yellow, blue, Yellow, orange, blue, orange, black, red, yellow, green, red, purple, orange, yellow, black, orange, blue, green, red, black, purple, blue, red, blue, purple, green, orange. orange. green, black, blue, red, red, purple, purple, green, green, Very good. orange. We can all clap for ourselves. हम सब अपने लिए ताली बजा सकते हैं और सब लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए।
Let us understand what we did today with our left and right brain. So our right brain was saying the color, but our left brain was concentrating on the word. So word येलो था और हमारे को बहुत प्रैक्टिस है पढ़ने की. येलो ब्लू ऑरेंज ब्लैक रेड ग्रीन कहने में हमें बहुत आसानी रही, लेकिन हमारे ब्रेन को बहुत प्रेशर आ रहा था और हम सब अटक कर बोल रहे थे. जैसे छोटे बच्चे को पढ़ने में मुश्किल होती है, हम सबको ये एक न्यू एक्सरसाइज, हमारे न्यूरॉन्स को मुश्किल हो रही थी ये कहने में कि लिखा तो येलो है बट वो है ग्रीन, लिखा तो ब्लू है बट वो है रेड. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड how our left brain and right brain are in the conflicts. हम क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं? लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स. क्या सच है, क्या नहीं, क्या ठीक है, क्या नहीं, मैं ये करूं या ना करूं. सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ. राइट और लेफ्ट, किस तरफ जाना है, और यही हमारे ब्रेन का काम है. Now, neural plasticity can be built. It can be built, and through yoga, we can build this. That's why I want to give you all a very welcome to join our more courses. From 21st June, we are going to conduct 3 months course for YTTC 500 hours. That's an international course, so that you can understand how the yoga can change your physiology, your psychology and your philosophy. Same way, लोग पूछते हैं हमें समाधि में तक नहीं जाना, या हम कैसे पहुंचेंगे. स्पिरिचुअलिटी हमने उसको इतना भारी वर्ड बना दिया है. लिव, you have to become a human with humane. That's all. अपने आप हम अपनी लाइफ के पर्पस को अचीव करते रहेंगे. So this is how we need to train our brain. But we have already built up. We need to build up new neural path. हमें अपनी सोच बदलनी होगी. हमें अपने आहार, विचार, हमें सब कुछ में अगर चेंज लाना है तो योग is the way, योग is the path, योग is the tool. If we adopt, then we can go ahead. और इसकी और deeper understanding के लिए it is, you all are welcome to join the next course. This is the MRI of our brain after practicing yoga for a certain period of time. So morphologically effect अगर आप सबसे पहला brain के mappings में देखेंगे, so it affected the awareness. It improves the awareness of the body. The second, the B section, if you see when we did the research, is effect on cerebral blood flow and glucose metabolism. Whenever I give lecture on nutrition and obesity management, I always tell people why nutritionists and dietitians are fail, because the glucose metabolism, obesity is lifestyle disease, it is correlated with blood glucose. Diabetic log ho rahe hain, pre-diabetic ho rahe hain. How it happened? Everybody knows the chart. किसी का mic on है, please इसको off कर लीजिए. I can't see who is speaking. Please अपना mic off कर लीजिए. रेनू जी, आप अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज. रेनू जी, yeah. So that activate your neural path. Metabolism. Why obesity has become epidemic for past 20 years, although we are telling people that the science is advanced now. Because dietitians are fail to understand how to handle the hypothalamus. It starts from here. Nobody wants to be obese. Nobody wants to look ugly. कोई नहीं भद्दा और मोटा लगना चाहता, लेकिन और सबको पता है इतने सारे डाइट प्लान है. कल आचार्य जी कह रहे थे गूगल ज्ञान और गूगल यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन किसी ने कोई डाइट किया, किसी ने पैलियो डाइट किया, किसी ने इंटरमिटेंट डाइट किया, सबको सेम इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं. पीपल आर फेल. एंड एवरेजली डाटा बताते हैं हमें रिसर्चर्स के, एक इंसान और स्पेसिफिकली विमेन अपनी लाइफ में 7 times डाइट प्लान ट्राई करती हैं टू वेट रिड्यूस द वेट.
सो इफेक्ट ऑफ न्यूरल एक्टिवेशन जो है वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हाइपोथैलेमस को हैंडल करता है. दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो फाइट विद योर प्री डायबिटिक कंडीशन और डायबिटिक कंडीशन. इसलिए लोग रिपोर्ट करते हैं कि जब हमने योग स्टार्ट किया तो उसके बाद हमारा ग्लूकोज लेवल क्यों डाउन आया. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड ब्रेन एक्टिविटी. थर्ड, अगर आप सी पार्ट देखेंगे एमआरआई का, सो इफेक्ट ऑफ न्यूरल एक्टिवेशन, यहाँ पर आपको बहुत सारे, अगर मैं कर्सर से दिखाऊं तो बहुत सारे ये हमने रंग जो है और बढ़ा दिए हैं, बिकॉज दीज आर द न्यूरॉन्स विच आर एक्टिवेटेड. एंड आफ्टर दैट इफेक्ट ऑन फंक्शनल कनेक्टिविटी, जो हमारे एक कनेक्टिविटी होती है, कनेक्ट होता है हमारे बहुत सारे फंक्शन से, बिकॉज देर आर सो मेनी फंक्शंस वी नीड टू परफॉर्म. समटाइम्स आपने देखा होगा लोग कई कई जगह, कई लोग बहुत एक्टिवली बड़े सारे काम कर लेते हैं एंड यू गेट अमेज कि तुम ऐसे कैसे हैंडल करते हो, बिकॉज देयर ब्रेन, दे आर यूजिंग मच मोर न्यूरॉन्स टू डू दीज काइंड ऑफ वर्क. और इसके लिए बहुत असेंशियल है कि हम अपने ब्रेन के न्यूरोपाथ को, न्यूरल एक्टिविटीज को बढ़ा कर रखें. इफेक्ट्स ऑन न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड mobilities. Neurotransmitters, they are the communication bridge between each neuron. कम्युनिकेशन, किसी का रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है, स्पोर्ट्स पर्सन का रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है, कुछ लोग बहुत स्लो होते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि उन्हें क्विकली मूव करना है. सो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दे कैन वर्क बेटर. एंड लास्टली, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये आपके धीरे धीरे आपको इतना एक्टिवेट कर देते हैं कि आप अपने जितना भी समय लेते हैं किसी काम को, उसको रिड्यूस डाउन कर देते हैं. इट हेल्प्स टू हैव मोर टाइमिंग फॉर योरसेल्फ, टू सिट एंड कॉन्सेंट्रेट मोर, एंड यू नो टू हैव दैट स्थिर सुखासना. आपको स्थिरता लाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करें, प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, और प्रॉपरली जो है हमारे अवेयरनेस इम्प्रूव हो जाए, हमारे अवेयरनेस टुवर्ड्स एवरीथिंग, नॉट ओनली टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, वॉट एवर यू आर डूइंग. व्हेन वी मूव, it is very important, when we move, it is very important that we become very aware. So awareness बढ़ाने के लिए योग न्यूरो एक्टिविटीज में इतना चेंजेस करता है. और आप अगर चाहें तो अपने आप को अपना, बिकॉज हम लोग अगर अपना राइट हैंड यूज करते हैं तो दैट मीन्स वी आर यूजिंग मोर ऑफ द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ब्रेन. एंड एवरीबडी, मोस्ट ऑफ अस आर, आउट ऑफ 10, 8 पीपल आर राइट हैंडर. सो हम सब एक ही तरीके के सोच वाले लोग हैं. अगर हम अपना लेफ्ट हैंड भी यूज करेंगे और लेफ्ट लिम्ब यूज करना शुरू करेंगे तो वी कैन एक्टिवेट आवर राइट ब्रेन ऑल्सो. यस्टरडे नीतू जी जो है वो ताड़ासना करा रही थी, तो हमने क्या किया था ताड़ासना में, हमने एक पैर पर बैलेंस किया था और उसके बाद हमने उसको रिपीट किया था दूसरे पैर पर बैलेंस. ये आप लोग डेवलप कर रहे थे, लोगों को नहीं पता, उनको नहीं समझ में आने नीतू ने, तो हमने एक तरफ ट्विस्ट किया, उसके बाद हमने ऑपोजिट साइड ट्विस्ट किया. So we are balancing our both the limbs, and through that we are balancing our both the brains. So this is the importance of performance of yoga, effect of yoga on physiology. Brain के MRI तक में इतने changes आए हैं, and that will help to change your spirituality and psychology also. वैलिडेटरी फंक्शन का आचार्य जी इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ वो अभी भी जुड़े हुए हैं. So now I am going to conclude the whole 3-day session, which was well designed by Acharya ji. Under his guidance, we were able to learn so much, and of course with the support of Neetu ji. Thank you so much Acharya ji and Neetu ji. Ashtanga Yoga, Acharya ji आप म्यूट हैं. Just 1 minute before you go ahead. Hello. Hello, हाँ जी आचार्य जी. Yeah, can you hear me? Yes, yeah. Yeah, okay. हाँ जी. I was just reviewing the program. I missed one point, was on the karma theory. जी. And जी.
two sutras here which spoke about the karma theory on the yoga, and that is from Patanjali Yoga Darshan. It says, Klesha Mula Karmashayo Drishta Drishta Janma Vedaniya. The stock of karma that we carry over, because for each and every action that we'll do, the outcome is not immediate. Some of them is immediate, some of them takes time. Like if we are working, some people work and get paid on hourly basis. जैसे कोई कारपेंटर आप करके आपके यहाँ कुछ ठीक कर दिया था, आपने उसको पे करके उससे छुट्टी ले ली. Some of them will work probably for a week at your place and you pay them after 1 week and they go. कुछ ऐसे हैं जो 1 महीने काम करता है, फिर महीने के अंत में they get this payment and that's gone like this. There are also people who work only on productivity. So at the end of the year, they get the bonus or the dividends, etc. Karma operates in the same way. हमारे हिंदुइज्म फिलोसॉफी में एक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे. So whatever you see at micro level also happens at micro level, at the universal level, and whatever you see at universal level also occurs at the individual level. So karma also operates like that. Some of the karma, the outcome is immediate. Like if you ate your food, your belly is filled just after that. Some of them, like you sleep, you need 4 hours sleep, 6 hours sleep, 8 hours sleep to go back to normal. So that is karma working like that. But the karma for which the outcome has not been reached in this life, it carries over as sanskar, as imprints for the next birth. The next sutra says, Sati mule tad vipako jati ayur bhoga. So in the presence of the sanskar which have not yet reaped their outcome, the karmas which have not reaped the outcome, this is going to be the decisive factor for our next life. And then it says Jati Ayur Bhoga. Jati is the species. According to the species that we are going to get the lifespan, Ayu, and Bhoga, what are the things that we will benefit from. Like humans, we know what is the potential there. We know what is the potential of other life forms. So it goes like this. That is the karma theory, and we always have to remember Newton's law of action says for each and every action there is an equal and opposite reaction. But karma says for each and every action it has an equal and corresponding reaction. Good will yield only goodness, and bad will lead only badness. So the choice is ours. Correct choice leads to positive karma, and wrong choice leads to negative karma. The decision is ours, and yoga leads us to unfold that latent, that dormant potential to yield a positive outcome in our life. Remember it says, Sati mule tad vipaka jati ayur bhoga. And this goes in line with the theory of karma. So yoga philosophy is a roadmap to liberate ourselves. जैसे पिछले हुए कर्मों को हम क्या करते हैं, योग के माध्यम से उसको inactive करते हैं. And to understand inactivity, just take, you have एक मुट्ठी छाना है आपके हाथ में. You divide it into two. One, you give it some water and some ventilation, some sunshine, it will germinate. The other one, उसको आप vacuum में बंद कर दें. It doesn't have any effect, it won't germinate, it won't grow.
So this is what we can do on our past karma through yoga. What have been the past karma, we can just do like this, put it in a vacuum, render it inactive, and grow the positive. And the positive, as it grows, the other one just remain the same. So we grow into a better and better person. And remember, for that, we are in our driver's seat. This is the key to happiness. The key to happiness at the level of the mind, at the level of our body, at the level of our spirit. Thank you. I just missed that. I just wanted to take it again. Thank you. थैंक यू आचार्य जी। पढ़ने के लिए हमेशा ही समय कम लगता है। किसी कोई भी एक सब्जेक्ट की डेप्थ में जाने के लिए पूरा जीवन कम है। Let us conclude this 3 days international course where you all have learned about the Ashtanga Yoga and Hatha Yoga Pratipika, Patanjali Yoga Sutra, and of course anatomy, physiology, and the practical aspect. Ashtanga Yoga is practices of series of postures. Yoga Sutra provided comprehensive understanding on the principles and practice with scientific background. It significantly contributes the guidelines for health, wellness, and lifestyle. Sadhana Pad is important and is a tool मैम आपकी to the आवाज नहीं आ higher रही। path, that is spirituality. Asana, to discipline the body. Pranayama, regulation of vital force. Pratyahara, regulation of senses. Dharana, concentration. Dhyan, meditation. And samadhi, the absolute absorption with supreme. मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मैं सभी को कहना चाहूंगी, समाधि समाधि जो एंशियंट टाइम पे लिया जाता था जरूरी नहीं है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, मैम आज के जमाने में समाधि हम कैसे ले सकते हैं? जब आप लोग एक अकेले कमरे में बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं, वो मेडिटेशन है। जब आप उसको ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप अकेले कमरे में हैं और आपको अनुभूति होती है किसी सुप्रीम की, किसी यूनिवर्स की, जहां आपकी एक कनेक्टिविटी है, जब भी आप क्वेश्चन मार्क में होते हैं, अकेले एक कॉर्नर में बैठकर जब आपको उसका आंसर मिलता है, वो भी समाधि है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए आचार्य जी और मैं हर एक को बोलते हैं कि आप लोग 10 मिनट मिनिमम, 10 to 20 मिनट, कल तो 24 मिनट्स का आचार्य जी ने बड़ा अच्छा मंत्र दिया ही था। हम अकेले बैठना शुरू करें, हम किसी एक जगह कंसंट्रेट करना शुरू करें, और वो सबसे इजी है अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना, अपने ब्रेथ फ्लो देखना, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना। लुक इनसाइड योर लंग्स, हाउ ऑक्सीजन फ्लोज. Look inside your bloodstream, how the cells are running and rushing with oxygen and carrying all the nutrients. Exhale all the negativity, exhale all the grudges, exhale out, and then you will find yourself not only lighter from your body, also from your mind and soul. Forget and forgive. This is the mantra Acharya ji and me would like to give you. कोई बात नहीं, जान है तो जहान है, हम है ना भी
इस जहान में, तो आगे कुछ ना कुछ कर लेंगे। राई का पहाड़ या पहाड़ का राई, that is very important to understand. अगर हम बात करें हठ योग प्रदीपिका की, सो हठा योगा में हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखी, और उन्होंने इसके थ्रू हमें 4 चैप्टर्स दिए, जहां पर उन्होंने सप्त साधना 7 प्रैक्टिसेस, इसका इसका प्रोसेस क्या है, 7 प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशंस, षट कर्मा, स्ट्रेंथ ऑफ आसनास, स्टीडीनेस बाय मुद्रास, calmness by pratyahar, lightness by pranayam, right perception by dhyana, and isolation by samadhi. So samadhi का मतलब है isolate होना. Try to isolate for 30-40 minutes, 24 minutes. Detach yourself from everything and sit with yourself. That is all about yoga. ये भी एक समाधि है। अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं एंड यू सिट क्वाइटली एंड यू स्पीक, यू कैन, अगर हम अपनी अंतरात्मा से बात कर सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर अंदर ब्रह्म है, तो हम भगवान से, हम गॉड से, हम यूनिवर्स से ही बात कर रहे हैं। हम लोग कभी यूनिवर्स से डिटैच नहीं हो सकते। वी आर इन द यूनिवर्स, वी आर अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, बट स्टिल वी आर अटैच्ड टू द मेजर पार्ट, मैक्सिमम पार्ट, द सुप्रीम ऑफ द यूनिवर्स। हम उससे कभी अलग नहीं हो सकते। सो सभी के अंदर सभी समाहित है। दैट इज to enhance your understanding not only about your body, about your mind, about your spirit also. Sushmana Nadi, Hatha Yoga, Pingala, it balances the prana, it balances the Pingala and Sushmana Nadi. So this is all in the how to travel your energy. This teaches by the Hatha Yoga, and Acharya ji जैसे हमेशा बात करते हैं, Rajaguna and Tamasa, that is inertia. Our inertia is to remove tamasa and regain, calm down. If you take a deep breath, you can always calm down your mind. You can always flow. You can always control the flow. और आज जो साइकोलॉजी में मैं समझाना चाहती थी, you can control your mind. You can control your left and right brain. You can have that control, and that's why we call it control your destiny. Design your own destiny. Whatever you want, ask from the universe. Don't ask from anyone. Ask from the universe. And when you start living in this universe, we are not living in the universe. We are just living in our own life. That's all. We have few connections, we have few responsibilities, we have few relations. That's all. This is not life. Life is beyond this. This is just a base of life. We have to come up, up and up above, so that we can have the essence of our life. इसी concluding remarks के साथ, I would like everybody to be motivated, not only to celebrate every year only International Day of Yoga, but it should be the beginning of your journey, so that next year when we meet, you all have that depth of knowledge, that depth of sense and essence and the taste of you. धन्यवाद। आचार्य जी, आप कुछ कहना चाहेंगे with the concluding remarks? आचार्य जी, आप म्यूट हैं अभी। Sorry. Wish you all a happy journey on the path of yoga. योग एक दिन के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव जाति के लिए है। और हम सब जो है अपने शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को प्रैक्टिस करें। And remember, yoga leads you to live the living values of human life as a real human being through yama niyama,
Through asana teaches you to be stable in life, to be level-headed, to be balanced. So through pranayam, breath control leads you to be in total control of your own self. And pratyahar teaches you moderation in life, to be in good physical, mental, spiritual, social, family circle. Then dhyan brings you to be a better performer in whatever you do in life. जैसे कहते हैं ना, झाड़ू लगाने वाले भी उसका ध्यान होगा तो कहीं पे धूल भी नहीं छूटेगा. And even for the one traveling in space, for the astronaut, that enables him to be focused in whatever he or she is doing. So it's for everybody, and learn the techniques, practice it daily with a regularity in your practice, and wish you all lots of success in your life. Thank you. Namaste. Thank you. धन्यवाद आचार्य जी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारे इंस्टीट्यूट में सेशंस ले सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग फ्री सेशन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स, जिनको भी ज़रूरत है, बिकॉज हम चाहते हैं कि पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द, जैसे कहते हैं ना, हमारे पास एक कस्तूरी है लेकिन हम सब उसको हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास वो कस्तूरी है। तो योग का इतना बड़ा हमारे पास एसेट है। हम सब वेल्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, अल्टीमेटली हेल्थ इज वेल्थ, और कोविड ने ये हम सबको सिखा दिया है, या योर बॉडी, योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। May you have abundance of wealth, but if your health, your physical, your mental, your spiritual, your emotional, your occupational, your social, your intellectual, these are all the components of wellness. अगर ये सारे components आपके complete नहीं हैं तो आपकी health कहीं ना कहीं deteriorate होगी, और whenever your health deteriorates, we can be trapped in any kind of epidemic, pandemic and whatnot. So you all are welcome. नीतू जी एक self management yoga and nutrition course कराती हैं, 2 week a week and 10 days का. You can join that. You can join YTTC 500 hours, because I am on my mission to prepare international yoga trainers so that we can work with other countries also, because other countries recognize, they understand only that affiliation or certification. So it is very essential that we step into the international world to teach people what is exactly the real yoga, not the diluted one. Not anybody is introducing any yoga. अभी आचार्य जी पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे हॉट योगा, HOT, हॉट योगा। ऑलरेडी टेम्परेचर ऑफ स्टूडियोज आर सो हाई वहाँ, जो कि एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकली भी वो खराब है। And I'm so sorry to narrate, I have visited 2-3 studios over here. They were smelling with the sweats because वो wooden के बने हुए हैं, उसके अंदर सभी लोग sweat out करते हैं. There is no opening, any window, because वो temperature उन्हें maintain करना है, so they have introduced it. Whereas I feel it is going to dehydrate not only body but also the mind. So एक नेचुरल एनवायरनमेंट में योग करना है, लेकिन वो उन्होंने उसको बिल्कुल कुछ और ही बना दिया है। ऐसे ही बियर योगा, तो आई ऑलवेज टेल पीपल गोट योगा, बियर योगा, ओके फाइन, we can work, we can do the yoga with animals but not with beer. So if my mission is, अगर हमने नहीं संभाला अपना योग तो फिर लोग दूसरे जब संभालते हैं तो फिर जो उसका हाल होगा वो हो ही रहा है। So you all are welcome to join our next batch 21st June से, और you have my number in my chat. You can contact me anytime. People who want to conduct the sessions for their any institute, any group, maybe the group of ladies, whatever, you can always contact me, invite us, and we will be available for you.
नीतू जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रुबीना है, हमारे साथ सोनिया मल्होत्रा जी हैं, हमारे साथ अंजू हैं। ये सब जो लोग जो हैं, they are all expert. They can conduct any type of session you demand. We will arrange the expert for you. Thank you so much, and hope to see you all in our next classes or courses and sessions. Thank you, Acharya ji, for